Hello, Assalamu alaikum. I hope all of you are in the good, the best of your health. Um, so, I think we should start the session. We are already across our time. So, I hope all of you are listening and the audio is clear and the picture is clear. So, uh, this today's session was arranged uh, for the purpose of understanding the US-Pakistan relationships. But before going into US-Pakistan relationships, uh, first of all, you need to understand the history. कि history क्या है और जो history है US-Pakistan relationship की वो it's not that uh, it's not that um, all hunky dory. It's not really shining history which we have with the United States of America. Uh, the relationship with the United States of America was in a there were ups and downs. ठीक है रिलेशनशिप में ups and downs आते रहे और the first thing which happened after 1947 was uh, that Pakistan got into a very tough situation और उसकी क्या वजह थी all of you know कि after independence we were facing post independence all of you know कि हमें जो इंडिपेंडेंस मिली it was at the cost of a lot of troubles. Number one, we were facing economic crunch. We were facing internal issues. हमारे अपने internal dynamics जो थे वो बहुत they were not pleasant. And then we will come to that कि वो क्या थे when we uh, go forward with the passage of this class. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो वी नीड टू अंडरस्टैंड इन द यूएस पाक relationships at that time was that World War II World War II had gone by और World War II के बाद there was an event that took place and that event was but it didn't took place it started rather and that was the Cold War and the Cold War का जो एक उसका एक शो था यू कैन से द कोल्ड वॉर शो had just started कोल्ड वॉर शो स्टार्ट हो चुका था और इस शो का जो कोलेटरल डैमेज था वो कहाँ पे फॉल कर रहा था वो सारा का सारा इन स्मॉलर कंट्रीज जिसमें आप पाकिस्तान को ले लें जिसमें आप इंडिया को ले लें जिसमें आप कंसिडर कर सकते हैं वियतनाम को कंसिडर कर सकते हैं जिसमें आप अफगानिस्तान को ले लें क्यूबा फॉर एग्जांपल यू कैन कंसिडर क्यूबा जो कि इस कोल्ड वॉर के क्रॉस फायर में आया टू जाइंट्स इन द शेप ऑफ रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वो फाइटिंग और making alliances, giving money. A Cold War makes a huge debate that we can go into Cold War, but the major uh, unique points of Cold War you need to remember is it was an ideological warfare. They were alliances, right? Alliances थे इसमें और थर्ड थिंग वाज इकोनॉमिक एड जो था जिसे हम क्या कह सकते हैं कि आप सिंपल एड उसे कह लें एड दी जा रही थी और उसमें
It was the Marshall Plan, if you remember. If you do not remember, just Google it. Just Google it. Um, right? Then what Soviets were doing is कि Soviets were entering into territories, or they were forming governments, ठीक है, अपने governments form कर रहे थे. And similar was the case with the United States of America and USSR. तो what happened was कि जब पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली उस वक्त, तो पाकिस्तान was faced with a dilemma. क्या डायलेमा था पाकिस्तान? पाकिस्तान को क्या डायलेमा था? पाकिस्तान का जो डायलेमा था पोस्ट इंडिपेंडेंस, मैंने आपको बताया हार्ड टाइम्स, रिमेंबर, hard times that we were facing. And those hard times was, and I told you, economy. Our economy was in doldrums. We were in bad situation. जो हमें assets मिले उसमें only 17% of assets. We got only 17% of the total asset, right? And then we got the 23% of ammunition army that we were given, ठीक है, right? So we were faced with a hard situation. My point is, कि you when you are a small country, right? Pakistan is a small country in relationship to United States of America, the USSR, right? So we were facing the situation कि यार हमारे पास डॉलर्स का मतलब पैसा नहीं है, हमारे पास जो है military equipment नहीं है, right? We have got a neighbor in the form of India at our doorsteps. और वो क्या चाहता है, right? What does India want? India want के to finish us. And what did Nehru say? Uh, they said, the leaders of India said कि Pakistan would be a short-lived experience. लिखें, a short-lived experience. Experiment, experience, these were the words, right? जो इंडिया ने कहा पाकिस्तान को. अब पाकिस्तान को मिलिट्री एड की ज़रूरत है, पाकिस्तान को एक डॉलर्स की ज़रूरत है. वी नीड मनी, वी नीड हेल्प, वी नीड टू स्ट्रक्चर आवर कंट्री. आप जब मुल्क बनाते हो, आपके मुल्क में इंटरनल इशूज़ होते हैं, तो हमें क्या चाहिए था? वी रिक्वायर्ड अलायंस. हमें अलायंस चाहिए थी. और उस वक्त जो अलायंस हम कर सकते थे, देयर वर टू कंट्रीज. वन वाज रशिया एंड वाज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. नाउ व्हाट डिड हैपन के we decided that we should move onward with the United States of America. What was the reason for that? हमारी जो सबसे पहले म्यूचुअल एक हमारी एग्रीमेंट हुई असिस्टेंस की, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से 53 में हुई. रिमेंबर दैट. द फर्स्ट थिंग व्हिच हैपेंड between United States of Pakistan, United States of America and Pakistan was that Pakistan and United States of America went into an agreement, okay? And that was mutual defense agreement, right? In 1954, correct that? It was a mutual defense assistance agreement. Mutual defense assistance agreement, okay? That was signed between Pakistan and United States of America. Or what was the reason? Many Pakistani soldiers under this agreement went for training to United States of America, ठीक है, and established a military advisor group in Rawalpindi. उस ज़माने में ये बना. अब क्या हुआ कि उस ज़माने में दी यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का जो प्रेसिडेंट था मूविंग ऑनवर्ड्स इन 56, वो कौन आया? ड्वाइट आइजन होवर, ठीक है. जब ड्वाइट आइजन होवर आया तो उसने रिक्वेस्ट की प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर सोहरवर्दी से, जो उस वक्त पाकिस्तान में थे, कि रिमेंबर कोल्ड वॉर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर इन स्टार्टिंग ईयर. स्टार्टिंग ईयर्स में आपको कोल्ड वॉर वाली बात रिमेंबर रखनी होगी. ये कोल्ड वॉर चल रही थी. कोल्ड वॉर की बात जब आपके जहन में होगी तो ये सारा का सारा जो डायनेमिक्स से स्टार्ट की, दैट वुड बी सो इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि यूनाइटेड स्टेट्स को क्या चाहिए था? हेल्प अगेंस्ट रशिया. पाकिस्तान में दो तीन बेसिस ऐसी हैं, उसमें एक शमसी एयर बेस है, एक बडबेर.
ठीक है, बडबेर कहाँ पे है? पेशावर के पास है। ये ऐसे ऐसे बेसिस हैं कि इनकी जो लोकेशन है इट्स वेरी वाइटल, मिलिट्रिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत वाइटल है। बड़ा बेस की एयर बेस रिक्वेस्ट की किसने? ड्वाइट आइजन होवर उस जमाने में। और टू दैट पाकिस्तान डिड वाज के पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट हुई कि इनके ऊपर नज़र रखने के लिए दे शुड गिव अ बडबेर एयर बेस, ठीक है। और पेशावर एयर स्टेशन भी उसे कहते थे क्योंकि वो पेशावर में, और वो एक साथ ही था सारा चक्कर। लेकिन बडबेर से इट वाज सो इजी, इट्स ऑल दिस एयर फोर्स स्टोरी। तो जो U2 इंसिडेंट था, इफ यू रिमेंबर द U2 incident, if anybody amongst you know what was the U2 incident, that's good. If you do not know, please find it. The U2 spy incident, ठीक है। It was a aeroplane, spy aeroplane थे जो कि they were you know spying on the Soviets, ठीक है। And then what happened was they were caught, ठीक है। So that things are improving between the US and Pak, ठीक है। पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के दरमियान रिलेशनशिप बिल्ड हो रहे हैं। और द रीजन फॉर दैट वाज कि हम यूएसएसआर के साथ क्यों नहीं गए। मैनी मैनी पीपल रिक्वेस्ट कि जनाब यूएसएसआर के साथ जाना चाहिए था। इन फैक्ट द रियल स्टोरी वाज कि जो इंडियंस थे दे वर रियली इम्प्रेस्ड फ्रॉम द सोशलिस्ट यूनाइटेड जो सोवियत यूनियन था, ठीक है, यूएसएसआर, उनकी बेसिस किस चीज़ पे थी? सोशलिज्म, कम्युनिज्म पे। कम्युनिज्म वाज ब्रॉट इन बाय मार्क्स। मार्क्स से वो इम्प्रेस थे सारे। इनके जो लीडर थे जिसमें नेहरू और ये सारे जो इनके लीडर्स थे इंडियंस, ये सारे किससे इम्प्रेस थे? मार्क्स से और सोशलिज्म से और कम्युनिज्म से। तो उनका एक नेचुरल अलाइनमेंट थी यूएसएसआर के साथ और सोवियत के साथ। और जो पाकिस्तान था उसकी इंडिपेंडेंस, ये बात याद रखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाज नॉट इन फेवर ऑफ अ डिवाइडेड इंडिया। इट वाज नॉट इन फेवर ऑफ अ डिवाइडेड इंडिया, इट वाज अगेंस्ट। और इसमें जो रूजवेल्ट था और ट्रूमन था। कौन? हैरी एस ट्रूमन, जिसने जिसने क्या किया था? एटम बॉम्ब गिराया था, हैरी एस ट्रूमन वो। और रूजवेल्ट, अगर आपको याद हो, एफडीआर, ठीक है, एफडीआर एंड रूजवेल्ट, दे वर एक्चुअली द वंस जो कि प्रो इंडियंस थे, ठीक है, इन द कांग्रेस। और बिकॉज इंडियन लीडर्स क्या चाहते थे कि डिवाइड ना हो, ठीक है, ठीक है, मदर इंडिया जिसे कहते हैं वो, मदर इंडिया डिवाइड ना हो, ठीक है। सो दे वांटेड कि इंडिया डिवाइड ना हो। और उसके फेवर में कौन कौन थे? रूजवेल्ट एंड ट्रूमैन, वो नहीं चाहते थे कि ये हो। और वो फिर क्या हुआ? वो प्रेसिडेंट बना। ट्रूमैन उस जमाने में प्रेसिडेंट था जब इंडिपेंडेंस का वक्त आया। सो एट द स्टार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस इट वाज हैपनिंग, दे वर नॉट इन फेवर ऑफ द डिवाइडेड इंडिया। सो नंबर वन पॉइंट आप ये नोट करें कि स्टार्ट में नहीं थे, बट एज सून एज द डिवीजन टुक प्लेस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो टिल्ट आया वो किस तरफ आया? पाकिस्तान की तरफ नेचुरली आया। एंड द रीजन फॉर दैट वाज कि पाकिस्तान की जो द रीजन फॉर दैट वाज नॉट कि जो इंडियंस थे उनके साथ उनकी बनती नहीं थी, बट इंडियंस दे हैड नो ऑप्शन। इंडियंस वर अलाइंड ऑलरेडी एंड they had a very very good relationship with the Soviets। तो ये बात आप याद रखें कि मुस्लिम लीडर्स से जब हमारे मुस्लिम लीडर्स जब यूएस के डिप्लोमेट से और एम्बेसडर से मिले तो उन्होंने क्या कहा मुस्लिम लीडर्स को इन इंडिया, यूनाइटेड इंडिया, ऑल इंडिया? दे सेड कि आप इंडिपेंडेंस ना मांगे, आप इंडिपेंडेंस ना करें। दिस शोज कि दे वर इन फेवर ऑफ यूनाइटेड इंडिया। नाउ व्हाट जिना सेड, जिना ने उनको रिजेक्ट किया। जिना ने कहा कि इफ वी गेट अ डेजर्ट, यानी अगर हमें सहरा भी मिल जाए तो हम वो भी लेंगे। तो इट्स हिस्ट्री, इट्स हिस्ट्री। तो व्हाट हैपेंड वाज फर्दर कि once established we had problems, a lot of problems, we went with the यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हम उनके साथ गए और हमारे लिए फ़ायदा था उसमें, बिकॉज वी न्यू कि सोवियत जो है वो, आर लीडर हैड अ विजन, दे न्यू कि सोवियत जो आइडियोलॉजी है that is not attractive, we knew that, and we had the understanding that going with the United States of America is going to save us, because United States of America का एक तो यूरोप में भी
इनका इन्फ्लुएंस था. ट्राई टू रिमेंबर दैट. ठीक है. तो नंबर वन, what I'm saying is कि why did we go with the United States of America is number one, economy. ठीक है. Our economy was very very bad. ठीक है. Then our leaders जितने भी थे हमारे, जिना कहाँ से पढ़ा था, यूके से पढ़ा था. और यूके की अलायंस किसके साथ थी, नेटो में किसके साथ थी, यूएस के साथ उनका ज़्यादा गुर्बत थी. दे वर मोर नियर टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. सो वी वेंट एंड वी फेल इन द यूएसए कैंप एंड इन द यूरोपियन कैंप. ठीक है. बट यूरोप में भी याद रखें कि एट दैट टाइम देयर वाज अ डिवीजन, डोंट फॉरगेट दैट, एंड दैट वाज that there was a Western Europe and there was a Europe Eastern. ठीक है. और ईस्टर्न में जो सारे लिथुएनिया और एस्टोनिया और ये छोटे कंट्रीज थी, दे वर अंडर द सोवियत, बिकॉज दे वर सोवियत यूनियन. उस वक्त में तो ये हुआ ही नहीं था ना कि सोवियत कोलैप्स्ड. राइट. सो वेस्टर्न यूरोप की बात हो रही है और वो यूएसए के साथ, और वहां से हमारे लीडर्स ने, दे वर इम्प्रेस्ड, दे हैड एन आइडिया. एंड बिकॉज वी had democracy, and democracy is more aligned with the Western system. So that is why we went there. It was more easier for us. And the thing was that we were given a genuine offer by the Americans. That is why we went with that. Our policy was not wrong at that time. Or the Soviets say their response was cold. It's the most important thing, that the Soviets जो थे उनका रिस्पॉन्स बहुत कोल्ड था. जब देखिए, जब आप किसी से you go into negotiations or talks or whatever, right, you expect ke the talks are going to go on if there is some genuine, there is some genuine, some legitimate response from them. उनसे कुछ ना कुछ ऑफर तो हो टेबल पे. अब इंडिया है, you cannot negotiate with India. The reason is that India is not ready to talk with you, and if they're not ready to talk with you, uh, why should you go and beg them? It's not like that. It's not so easy to go into foreign relationship. International relations is not so easy. It doesn't go by this rule कि आप beg करें. ठीक है. Unless it's very very ridiculous decision making. So we didn't go with yes sir. These were the reason. Going on further, जो इंडियन नेहरू का मैंने बताया शॉर्ट लिव्ड एक्सपेरिमेंट. ठीक है. एक्सपेरिमेंट. और जो फर्दर इसमें डेवलपमेंट हुई उसमें दो चीज़ें थी. देखें, अयूब खान का वक्त आया, और अयूब खान के टाइम पे व्हाट हैपेंड वाज दैट देयर वर द सीटोज एंड द सेंटोस. ठीक है. हमारे डिफेंस एग्रीमेंट्स हुए उनसे. ठीक है. सीटो एंड सेंटो. एंड देन वी हैड ए गुड टाइम. ठीक है. ए गुड पीरियड until good period until 1965. जब 1965 की वॉर हुई, ठीक है, तो देन थिंग्स अगेन स्टार्टेड टू गो बैड. उसकी वजह ये थी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैड टोल्ड अस कि आप, बिकॉज वी हैड गिवन देम एश्योरेंसेस कि वी आर रिस्पॉन्सिबल नेशन. ठीक है. हम रिस्पॉन्सिबल हैं. और इंडिया में बिकॉज वी वेंट ऑन टू डू एडवेंचर्स देयर, हमें बड़ा इजी लग रहा था कि हम कर लेंगे सारा कुछ. बट इट डिडंट हैपन. इट वेंट बैड. एंड फॉर दैट यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ने हमारे ऊपर सैंक्शंस किए और हमारे साथ उनके ताल्लुकात ख़राब हुए. याद रखें, इन दैट टाइम इट वाज कैनेडी, एंड आफ्टर कैनेडी जो है लिंडन जॉनसन जो थे वो ही वाज हेडिंग, बट ही वाज नॉट इंटरेस्टेड पर्सनली इन पाकिस्तान. ठीक है. सो तो यूएस ने क्या किया, एम्बार्गोज लगाए. आप लिखें एम्बार्गोज. ठीक है. एम्बार्गोज लगे पाकिस्तान के ऊपर एट दैट टाइम, which resulted in an economic collapse. After 65 पाकिस्तान इकोनॉमिक कोलैप्स सारा कुछ हुआ. ठीक है. Now from 1971 onwards and 74 we had very good relationships, and that relationship की वजह क्या थी, because यूनाइटेड स्टेट में एक बंदा था रिचर्ड निक्सन. He had a very good view about Pakistan, and God knows whatever reason they were. लेकिन रिचर्ड निक्सन एंड याद रखें प्लस हेनरी किसिंजर. If you people do not him
do not know him, okay, so kindly know him because he was a man, he was an expert at diplomacy, okay. So Henry Kissinger, Dr. Henry Kissinger, uh, him and Richard Nixon, they were personally interested in relationship with Pakistan. और उसकी वजह क्या थी कि रिचर्ड निक्सन जो था जब वो वाइस प्रेसिडेंट था, ही विजिटेड पाकिस्तान इन 1953. अब ये देखें, he visited in 1953 and by the warmth he received, देखिए this is where personality actually molds or it gives direction to foreign policy. Okay, personalities, Richard Nixon was a personality, he was a human being, he wasn't some kind of an animal who didn't perceive emotions. So when he came to Pakistan as a VP, as vice president in 1953, he received warmth and he was impressed by that by the reception that was given to him, okay. And impression of India was diametrically opposite. And what happened was they went to India, and when they went to India, uh, the Indians were boasting about their might. Okay, we are Mother India and we are so great. So they were not impressed because Americans, they are arrogant. That is the truth. So they were not really impressed by the boasting and by all of their by their greatness, that India is it is an empire, a thousand and thousand of years, and we've got a history and this and that, and they were not impressing the Americans. 1953, don't forget the date. So what happened was that they came and they were confused and not clear about India, but they were very sure about Pakistan, and that played the role in 1971 to 74 when we had excellent relationship with the United States of America. But try to understand, okay, at that time we also did a great favor to the United States of America and a very, very uh, injurious step to the Soviets, and that was helping the US and Chinese to form diplomatic relationships, to form friendship, to have relations in general. तो हमने क्या किया कि हमने यूएस और चाइना के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा किया. If you people do not know it, search it, read about it. It's a fascinating story कि how did Pakistan with such great diplomatic efforts, with great uh, you know uh, mentality, with great intelligence जो पाकिस्तान ने उस ज़माने में किया, कि the whole world was not even an inch informed about that event that took place in China. That from here, Bhutto Saab, he went on and he uh, had this indication that Americans want to form a relationship with China because it was Cold War. And in the Cold War, United States of America on the one side and Soviet on the other side, and China in the middle. And China was up there for grabs. Because remember, China was not given recognition. China became China later. In when UN was there, in the UN, the representation of China was by Taiwan. Did you know that fact? I was amazed when I came to know that Taiwan was representing China. So जो China China, it wasn't that in the UN, right? So after that visit, what happened was कि जब visit हुआ, तो visit के बाद visit के बाद चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशनशिप बने. और उसके बाद the Soviets were really really angry. They were really angry at Pakistan, and the reason for that was that Pakistan actually spoiled the Soviets, and the Soviets told Pakistan, and it is on records in various places, that they actually said it. They explained कि uh, जो आपने सोवियत के साथ किया है, we will never forgive, we will never forget. Two things: we'll never forget and we will never forgive. And later on, we saw that कि जब ढाका फॉल हुआ, तो the Soviets kept on
blocking the resolution in the Security Council about the East Pakistan. ईस्ट पाकिस्तान के बारे में दे केप्ट ब्लॉकिंग इट इन फेवर ऑफ इंडिया, ठीक है, कि जब वी वांटेड कि जनाब इट इज़ एन ऑक्युपाइड टेरिटरी, ये ऑक्यूपेशन है, ठीक है, और सो इज माय वॉइस क्लियर राइट नाउ? Are you able to hear me right now, right? Okay. So, so Soviets ने वो बात याद रखी, and things went on and it went really bad, you know, later. फिर जनाब जब अफगान जिहाद स्टार्ट हुआ, अफगान जिहाद में क्या हुआ कि निक्सन का टाइम ख़त्म हुआ और उसके बाद जो बंदा आया जिमी कार्टर, ठीक है, उसका जब टाइम आया तो दैट वाज अ रियली बैड टाइम फॉर अस, अगेन वी फेस सैंक्शंस एंड ही फाउंड गुड रिलेशन। जब जब यूएस और सोवियत के रिलेशनशिप अच्छे हुए, पाकिस्तान पे मलबा गिरा, ठीक है, जब जब उनके रिलेशनशिप अच्छे हुए, मलबा किस पे गिरा? पाकिस्तान पे गिरा, बिकॉज पाकिस्तान यूज टू प्ले अ रोल फॉर यूएस अगेंस्ट द सोवियट्स, ठीक है, वो सोवियट्स के अगेंस्ट रोल प्ले करता था। तो इट वेंट रियली बैड इन द कार्टर एरा, ठीक है, कार्टर एरा जो था उसमें ये काम जो है ये ख़राब हुआ। फिर जनाब ये टाइम ज़ियाउल हक का आया, 79 के बाद ज़ियाउल हक का आया, और स्टार्टिंग ईयर्स में इट वाज रियली टफ, ठीक है, बट लेटर ऑन अगेन जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए और जिमी कार्टर जो थे वो जनाब उनकी प्रेसिडेंशियल जो टाइम था उनका ख़त्म हुआ, और फिर क्या हुआ? फिर जनाब रोनाल्ड रीगन जो कि यूएस के प्रेसिडेंट बने, और रोनाल्ड रीगन जो थे वो एक वार हॉक थे। उन्होंने जनाब जो जो मुजाहिदीन का अफगानिस्तान में हुआ सारा कुछ, अफगान जिहाद, ठीक है, जो अफगान जिहाद में हुआ वो सारा का सारा जो फियास्को हुआ अफगानिस्तान में, जिसे क्या कहते हैं, ऑपरेशन साइक्लोन, ठीक है, जिसमें सीआईए और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस आईएसआई को authored that guerrilla warfare against the Soviets in Afghanistan. जब अफगानिस्तान में the Soviets came and they toppled all the setup in अफगानिस्तान और उन्होंने कंट्रोल किया, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इंटरेस्ट हुआ और वो यहाँ पे वाया पाकिस्तान उन्होंने जिहाद को एक्सपोर्ट किया इनटू अफगानिस्तान, एंड बाय द सपोर्ट ऑफ वेपन्स और स्टिंगर्स भी दिए और सारा कुछ जो यूएसएसआर के साथ हुआ कि वो अफगानिस्तान प्रूव टू बी अ ग्रेव यार्ड फॉर देम, ठीक है। देन थिंग्स वेंट ऑन, फास्ट फॉरवर्ड, वहाँ पे यूएसएसआर के जनाब गोरबचेव आए, और गोरबचेव जो थे उनकी वजह से जो है यूएसएसआर बैक्ड आउट फ्रॉम द कोल्ड वॉर, एंड इवेंचुअली what happened was कि the USSR crumbled, literally it literally crumbled, बिल्कुल जो है तहस नहस हो गया यूएसएसआर, और जितने भी उससे जो है मशरूम ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्टेट्स उससे निकली, और वहाँ पे जनाब कोसोवो, बोस्निया एंड दिस एंड दैट, सो मेनी स्मॉल कंट्रीज। फिर जनाब वो टाइम आया कि पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई। आई टोल्ड यू कि जब भी यूएसएसआर और रशिया गुड फॉर्म में आए हैं और उनकी लड़ाई कम हुई है या देयर वाज अमिकेबल रिलेशनशिप, पाकिस्तान had always had a bad run, और पाकिस्तान was it's a small country, it always required a bigger country। a bigger country जो होती है उसको आपकी ज़रूरत नहीं होती, it can either take it from you, it can take it from somebody else, but as a smaller nation we always required a bigger country because we had no way। दिस इज इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, आप अपने आसपास देख लें जो आप में सबसे पावरफुल होता है, एवरीबडी ट्राइज टू कीप गुड रिलेशनशिप्स विद हिम बिकॉज ही नोज के
the sword is going to fall upon me if God forbid I had bad relationship. For example, as we will discuss this, कि पाकिस्तान के जब bad relationships हुई यूएस के साथ, this CPAC and this BRI went forward, fast forward. Pakistan had to face the crunch in the form of FATF. आपने FATF देखा, आपने IMF के loans देखे, वो tough, such tough regulations upon us, and such tough, agendas of IMF for us to get the loan. So that is the reality. That is the reality. That is how you deal with foreign policy. That's how you see things. It's not so easy. And the Soviets, why didn't we go with it? Because they didn't had got things to offer to us. They had nothing. They were not in reality a superpower. They were. They are a major, they were a major power, but their ideology, their economy, their own perception in the world was not that excellent to go with them. So for in that time, it was the best decision for us to go with the United States of America. I'm not saying it was a good decision or bad decision, but we had no option, right? And if you have other options, you can think over it. ठीक है, आप चाइना के साथ नहीं जा सकते थे। चाइना की उस ज़माने में तो हालत ये थी कि वहाँ पे जनाब लोग साइकिलों पे फिरते थे। ठीक है, साइकिल तो दूर की बात, वहाँ लोग गरीब थे, वहाँ की गुर्बत, चाइना ने कितने लोगों को गुर्बत से निकाला रिसेंटली, बिकॉज चाइना, they went into great development. It's a story of the recent. It's not a story of that time कि 47 के बाद China started to develop and it was a major power and we could have went with China. No, it was not an option. China was not an option. UK was in tantrums. UK खुद खत्म था. Soviet had, but Soviet का उस वक्त जो बंदा था स्टालिन, he was a murderer. He was killing people. He was as bad as Hitler. But बिकॉज हिटलर का ज़्यादा मशहूर हुआ, हिटलर के ऊपर सारे लोग नाराज थे, हिटलर के अगेंस्ट लोग थे, एंड एज दे से कि इट इज़ दी विक्टर्स ऑफ द वॉर हु राइट हिस्ट्री। ठीक है, जो लोग जंग जीतते हैं वो हिस्ट्री लिखते हैं, और स्टालिन ने जीता और उसमें हिस्ट्री लिखी कि हम अच्छे लोग हैं। इट वॉज नॉट कि दे वर सच गुड पीपल, दे वर ऑल्सो ब्लड थर्स्टी एंड टायरेंट्स। तो वी वी गो कम बैक टू द थिंग कि जब जिहाद ख़त्म हुआ और अफगानिस्तान के अंदर सिविल वॉर हुई, नॉट गोइंग टू अफगानिस्तान, हमारे ऊपर सैंक्शंस लगे और हमारे ऊपर जो प्रेसलर अमेंडमेंट्स थे, ठीक है, वो हमारे ऊपर आए। ठीक है, और जनाब हमारे ऊपर ये इनको पहले से पता था कि वी आर डेवलपिंग न्यूक्लियर्स, क्योंकि 74 में इंडिया ने क्या किया, उन्होंने जनाब पीसफुल पीसफुल कोट एंड कोट पीसफुल ब्लास्ट किए न्यूक्लियर। ठीक है, और वो जनाब पाकिस्तान के लीडरशिप ने क्या कहा कि हम घास खाएंगे लेकिन हम इसको बनाएंगे। एंड देन ऑल द AQ खान स्टोरी कि हमने स्टार्ट किया डेवलपमेंट, हमने कोल्ड वार का पूरा पूरा फ़ायदा उठाया अपनी न्यूक्लियर को सेव करने के लिए, बिकॉज इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ योर एग्जिस्टेंशियल एग्जिस्टेंशियलिज्म। आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर आपके पास न्यूक्लियर ना होता, गॉड फॉरबिड, आज आपके पास ना होता, आप क्या करते? सो देन फास्ट फॉरवर्ड टू 1998 कि जब हमसे पहले इंडिया ने किए न्यूक्लियर्स, फिर हमने किया, फिर जनाब हमारे ऊपर दोबारा सैंक्शन लग गए। ठीक है, एंड देन सैंक्शंस जो थे वो क्या हुए, प्लस 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 लिखता हूँ, और शदीद हुए, हमारे जो एसेट्स थे वो फ्रीज हुए। So it's when I told you in the start, the relationship with the United States and Pakistan were up and down, up and down. कभी अच्छे कभी बुरे, कभी अच्छे कभी बुरे, और हमने तब फायदा उठाया जब we needed them, right? अब आप देखें स्टोरी को कि अब हमारे ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं। ठीक है, पूरी दुनिया में हम बदनाम है, डिक्टेटरशिप है पाकिस्तान है, मुशर्रफ रजीम है, पाकिस्तान का नाम बदनाम है। Nobody wants to give a to shake a hand with us because nobody wants to welcome us. We are the bad players in the arena. हमारा यहाँ पे डेमोक्रेसी गिरी है, and they are the champions of democracy। ठीक है, तो सैंक्शंस लगे, पाकिस्तान की जो है मुशर्रफ थे, ठीक है, और पाकिस्तान के पास जो जो एसेट्स थे फ्रीज हुए। ठीक है, एंड वी वर इन कंप्लीट डेड टर्म्स। और फिर क्या हुआ कि 9/11, और अब आप देखें कि 9/11 जब हुआ, जनाब बिन लादेन, उसामा बिन लादेन एंड अलकायदा ऐसा शुड से ने कहा कि हमने अटैक किए हैं, हमने ट्विन टावर्स गिराए हैं। बुश आया, बुश ने कहा जनाब हम पूरी दुनिया से टेररिज्म को ख़त्म करेंगे, हम
in every corner we are going to chase them and we are going to kill them, and it's about the sovereignty of United States of America, और सुपर पावर पर हमला हुआ है, we are not safe, we have to kill terrorism. And then what is called as the war on terror, ठीक है, war on terror it started. जैसे आप लोगों ने देखा कि द कॉस्ट वी पेड फॉर दिस, द वॉर ऑन टेरर, और वॉर ऑन टेरर में कौन कौन जनाब किस किस मुल्क के साथ क्या क्या हुआ वो देखते हैं. अफगानिस्तान was the first victim of this war on terror जनाब. पाकिस्तान तो था ही था ना, पाकिस्तान को आप ऐसे ही लिख लें. पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर जब रेड हुए या स्टार्ट हुए, जब they decided through the auspices of the UN, ये बात याद रखें, UN रेजोल्यूशन के साथ they came and they invaded Afghanistan. पाकिस्तान को ये ऑप्शन मिली कि will Pakistan support the United States of America or not? That was the question. And the reason which was said to Pakistan कि पाकिस्तान को ये ऑप्शन दी गई कि either support United States of America or we are going to send you to the Stone Age. पाकिस्तान को क्या कहा गया in on record? मुशर्रफ ने बुक में लिखा कि मुझे ये कहा गया कि either go with the United States of America against the Taliban and Afghanistan, जो भी था, or get ready to face yourself and we are going to send you to Stone Age. Later the Americans denied it and they said कि we never use such sort of जो है such sort of, हमने कभी भी language use नहीं की, और ये मुशर्रफ जो है खुद से he is making up stories, whatever the truth, but that was a fact कि rejecting the superpower was difficult. Now Musharraf needed legitimacy. Number one, मुशर्रफ को क्या चाहिए थी? लेजिटिमेसी. और यूनाइटेड स्टेट्स क्या चाहिए थी? पाकिस्तान की अलायंस. So this happened. Legitimacy was given, alliance was formed, war on terror, a lot of loss, but a lot of money. Okay, 2008 में recession आया, but Pakistan didn't face the crunch because पाकिस्तान के पास massive amount of money, lot of money. Trump ने कहा ना, we give them billions and billions of dollars. He's right, we received billions and billions of dollars. Fast forward, uh, all of this happened, and Pakistan was supporting. Pakistan was helping against. Pakistan even handed Taliban ambassador, and the Taliban ambassador, I think Stanik Zai, he is now the lead negotiator of Taliban. So we need to read history in order to understand how difficult it is to in the recent developments जब हम basis की बात कर रहे हैं. So we handed over a Taliban ambassador, ठीक है, we supported all the, we gave them air channels, ठीक है, we gave them routes for their for all of their supplies, ठीक है, उनकी supplies के लिए उन्हें दिया. So we were in alliance with the US. फिर चलता गया हमसे डूम वॉर की बातें की गई, ठीक है, कि डूम वॉर, जरदारी साहब की हुकूमत आई, उसामा बिन लादेन अटैक, ऑल ऑफ द फियास्को, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में बदनाम हुआ, और हमसे कहा गया कि आप सीक्रेटली आपने जो है सेंचुरीज जो हैं उनको ख़त्म नहीं करते. फिर हमने स्वात ऑपरेशन किया फॉर आवर ओन नीड्स, हमने नॉर्थ वजीस्तान ऑपरेशन किया, ऑपरेशन ज़रब अज़ब, रद्दुल फसाद, फास्ट फॉरवर्ड, ये सारे ऑपरेशन हुए. वी लॉस्ट 70,000 ऑफ आवर पीपल, हमें इसमें इतना नुकसान हुआ, ठीक है, और हमें जो नुकसान हुआ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, हमें कोलेटरल डैमेज, हमें जो उसमें बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर ह्यूमन लॉस के अलावा हमें नुकसान हुआ. दिस वाज अ कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट. लेकिन एक बात याद रखें कि हमारे जो न्यूक्लियर थे उसके ऊपर हमने स्टीयर किया, हमारे न्यूक्लियर्स के ऊपर सैंक्शन थे. जब हम यूएस के अलायंस में गए तो वो सैंक्शन लिफ्ट हुए, और हमने क्या किया, सेफली हमने ड्राइव किया. अब क्या है कि जनाब न्यूक्लियर्स का सारी सिचुएशन, और ये स्टीयर किया हमने, इंडिया भी था, हम भी थे, लेकिन इंडिया तो was there already, but लेकिन इंडिया was a good great economy, great market for USA. So USA was reluctant to go strong against India, और यूएस और इंडिया की भी रिलेशनशिप्स अच्छे होने स्टार्ट हुए. अब मैंने कहा उसामा बिन लादेन का अटैक हुआ, उसके बाद थिंग्स वेंट बैड, सलाला हुआ, ठीक है, रिमेंबर ये चीज़ें, सलाला चेक पोस्ट अटैक,
ठीक है, और OBL में लिखता हूँ ओसामा बिन लादेन। ठीक है, ये दो चीज़ें हुई। सलाला चेक पोस्ट जब अटैक किया यूएस ने, पाकिस्तानी सोल्जर्स को उन्होंने शहीद किया। इसमें पाकिस्तान ब्लॉक था, द चैनल्स जितने भी ट्रांसपोर्ट उनका जो होता था यहाँ से, वो रूट्स हमने बंद किए, और हमने बॉर्डर बंद किया तोरखम, हमने स्पोर्ट सप्लाई लाइन हमने कट कर दी। सिचुएशन बैड हुई पाकिस्तान के अंदर, इंटरनल इश्यूज, जनाब इफ्तिखार चौधरी वाला सारा फियास्को वेंट ऑन। फास्ट फॉरवर्ड मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत आई। ठीक है, एंड मैं आपको बड़ा आसान करके शॉर्ट करके बताता हूँ ड्यू टू द पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम, कि हमने, फिर मैं रीसेंट उस पर आता हूँ, कि हमने BRI इनिशिएट किया, जिसमें CPEC फ्लैगशिप प्रोजेक्ट, इस पे हम चाइना के साथ इन लाइन हुए। हमारे IMF के लोन्स चल रहे थे, हम गए चाइना के साथ, हमें $62 बिलियन इन्वेस्टमेंट मिली, विच वॉज इनिशियली अबाउट 50, फिर 62 पे चली गई। ठीक है, चाइना के साथ हमने स्टार्ट किया, इट रियली अनॉयड द यूएस, और यूएस हमें बार बार कहता रहा कि ये डेट ट्रैप है। एंड व्हाई डिड वी गो विद दैट? बिकॉज यूएस इन अफगानिस्तान वाज involved, ठीक है, was, and Al Qaeda was like, it was flattened, it was substantially demolished. Al Qaeda का नाम निहात, तालिबान was the new enemy for the US, जो कि US के खिलाफ लगा रहा, उन्हें मारता रहा वहाँ पे। बट पाकिस्तान, ऑन द ड्रोन्स, पाकिस्तान ने उनके साथ प्रोटेस्ट किया, तो पाकिस्तान sort of distanced itself from the Afghan thing। और बट पाकिस्तान वाज रियली इन्वॉल्व, ऐसा नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान वाज नॉट, बस पाकिस्तान ने अपने इंटरनल ऑपरेशन किए, सारा कुछ सफाया किया, इट रियली गॉट स्टेबल इनसाइड पाकिस्तान। बट आई थिंक विच अफगानिस्तान वाज हैपनिंग वाज स्टिल हैपनिंग, कि वहाँ पे अटैक्स ऑन द यूएस सोल्जर्स, अटैक ऑन अफगान सोल्जर्स, इट वेंट ऑन, और जितने फॉरनर्स थे वहाँ पे चलते रहे। तो पाकिस्तान ने चाइना के साथ ये सारा कुछ स्टार्ट किया, और इसका, बिकॉज पाकिस्तान न्यू कि जब यूएस की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई सारी अलायंस की, तो क्या होगा कि अगेन sanctions and all of that, because Pakistan has really been a weak state. The United States does not need Pakistan apart from the times of need। ठीक है, अब क्या हुआ जनाब, कि जब जब हम CPEC के साथ गए, तो हमें नंबर 1 फैटफ वाली सारी स्टोरी हमारे सामने आ गई, कि हमें फैटफ में ग्रे लिस्ट कर दिया गया, और हमें धमकियां दी कि विल ब्लैक लिस्ट यू इफ यू डू नॉट मीट हाउ मच 28 पॉइंट्स। नंबर 2, हमें कहा गया कि IMF के लोन्स आपको नहीं मिलेंगे, बिकॉज आप ऑलरेडी डेट ट्रैप में हैं। आप जनाब CPEC का बताएं कि CPEC में आपने क्या कर्जे लिए हुए हैं, एंड CPEC फॉर वट एवर रीजन, आई डोंट नो, चाइनीज आर नॉट कंफर्टेबल ऑन opening up the terms and agreements of the CPEC। तो IMF was demanding कि जनाब आप हमसे शेयर करें कि आपकी कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, तो देन वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड विद। तो हमारे ऊपर वहाँ पे फैटफ में प्रेशर आया, IMF में प्रेशर आया, हमारे ऊपर जितनी भी बैंड ऑर्गेनाइजेशन थी जनाब, पठानकोट, ठीक है, पठानकोट इंसिडेंट हुआ, बालाकोट इंसिडेंट हुआ, ठीक है, इंडिया में जो अटैक्स हुए, उसकी वजह से हमारे ऊपर प्रेशर है कि ना आप ये जैश को और इस सिपाही साहबा को और इन लोगों को आप नहीं करते, तो हमारे ऊपर प्रेशर आया बहुत सख्त किस्म का। एंड ड्यू टू दिस CPEC वी आल्सो लॉस्ट यूनाइटेड स्टेट्स का जो कोलिशन सपोर्ट फंड आता था हमें, CSF, वो फंड्स हमारे बंद हुए, हमारी मिलिट्री ट्रेनिंग्स बंद हुई, और हम लो वेस्ट जो है उस पर पहुंच गए थे, लो वेस्ट। फिर जनाब तालिबान का डायलेमा आया, और तालिबान के साथ क्या किया यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ने, अगेन दे स्टार्टेड टू एंगेज विद देम इन ऑर्डर टू एग्जिट फ्रॉम द अफगानिस्तान। और उसमें जनाब साहब ट्रम्प का इमरान खान को लेटर, इफ यू रिमेंबर, एंड ट्रम्प आस्क्ड इमरान खान टू सपोर्ट एंड टू Afghanistan help Afghanistan in bringing Taliban on the table. And Imran Khan in Pakistan did help, and they brought Taliban on the table, और फिर दोहा एग्रीमेंट हुई जो आप सबको पता है। नाउ दोहा एग्रीमेंट के बाद क्या हुआ
now all of you know USA is now drawing down, exit कर रहा है, asking Pakistan to give bases in order to keep a check on Afghanistan. Pakistan is in a dilemma. If it gives bases, number one, wrath of the Taliban. Number two, wrath of Iran. Number three, China won't be that happy. And number four, Russia. Number five, internal pressure. ठीक है, ये चीज़ें आपकी नेगेटिव्स हैं अगर आप बेसिस देंगे. अगर आप देंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा? नंबर वन, यू मे गेट सम फाइनेंशियल सपोर्ट लाइक डॉलर्स. You may get relief in FATF. You will get support in the GSP plus. ठीक है. You may get relief in IMF loans. आपके loans हैं, ठीक है. You may get help in that. Or you may get some trade and some sort of minimal trade with the USA. ठीक है. But that is what you will get. आपको हो सकता है कुछ F-16s and sort of that, some sort of small arrangement, not big arrangement, because they just need bases. But if you see, these are the positives and these are the negatives. Okay. So it is up to you to decide which one is better. But Prime Minister Khan has said clearly in a recent interview that absolutely not. Absolutely not. Which means that there must have been internal decisions by the big players, and we've decided not to go with the basis. So with this, I hope you understood clearly, and you had a great insight into it. The historical relationships show that whenever the United States needed us, they used us, and whenever we needed them, हमने भी फायदा उठाया, उन्होंने भी फायदा उठाया. उनको हमारी ज़रूरत थी, they offered us whatever they had. When they offered us, we requested for our own liabilities. हमने अपनी कमजोरियों के लिए उनको रिक्वेस्ट की कि जनाब ये हमारी वीकनेसेस हैं, आप इन पे हमारे साथ हेल्प करो. सो इट इज ऑलवेज बिन अ शॉर्ट टर्म. नंबर वन आप याद रखें, शॉर्ट टर्म सेटिंग होती थी हमेशा, लॉन्ग टर्म नहीं होती थी. नंबर वन, ठीक है. शॉर्ट टर्म में हम गए हमेशा. हमें ये हमेशा ये देखा कि जनाब शॉर्ट टर्म क्यों रही. What is the reason for this? Pakistan does not have anything to offer to America. And why is that? Because Pakistan is not a big economy. Pakistan is not strategically important in long term. Long term में नहीं important, short term में हमेशा. जब भी अफगानिस्तान का इशू आया, कोल्ड वॉर का इशू आया, बेसिस का इशू आया, ठीक है, तो इन्हीं दो तीन चीज़ों पे पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी. Apart from that, why do they need us? They have got good economy than us. They've got good infrastructure than us. They've got a great country. They've got great scientists. They've got a good army. Why do they need us? Yeah, right? They are not Afghanistan who need economy, who need money, who need vaccines, right? उनके पास वैक्सीन है, उनके पास फाइजर है, उनके पास J&J है, जॉनसन एंड जॉनसन है. They've got all sorts of things, right? So why do they need us? They need us. They only need us when they have a genuine requirement. Like अफगानिस्तान में होता है बस. ईरान के केस में हो सकता था, बट इट्स नॉट हैपनिंग. वी आर सीइंग JCPOA नहीं होगा. सो नाउ अगेन वी आर इन रिक्वायरमेंट. बट दिस टाइम माय पर्सनल ओपिनियन, नॉट ऑफिशियल एनीथिंग, मैं पर्सनल अपना असेसमेंट मेरा ये है कि पर्सनल ओपिनियन कि वी विल नॉट गोइंग टू गिव बेसिस बिकॉज इट इज़ नॉट स्ट्रेटेजिकली वायबल फॉर अस. देखिए, आप वो वाला सौदा करेंगे, अपने माइंड को यूज़ करें. आप वो सौदा करेंगे जिसमें आपको फ़ायदा होगा कि यू गो फॉर ट्रेड, यू गो फॉर दैट एग्रीमेंट जिसमें आपको फ़ायदा हो. आपको इसमें क्या फ़ायदा है? यूनाइटेड स्टेट्स ने यहाँ रहना नहीं है. यूनाइटेड स्टेट्स नॉट गोइंग टू कम हियर टू लिव.
ऑल दैट इज गोइंग टू हैपन इसके उन्होंने चले जाना है यहाँ से, ठीक है, दे आर नॉट हियर फॉर एवर, ठीक है। और चाइना जो आपका नेबर है, ईरान जो आपका नेबर है, दे आर हियर फॉर एवर, दे आर योर headache for the rest of your life. Borders do not change. आप ऐसे यहाँ से उड़ तो नहीं सकते कि हम मार्स पे चले जाएं। So remember that is important कि आप क्या करेंगे इस, क्या आप अपना डिप्लोमेटिक एक्यूमेन, योर इंटेलिजेंस आप ऐसा यूज करें कि आप इसमें एक बात याद रखें कि आप यूएस को डिनाई करके आप याद रखें कि आप भी चैन के सुकून नहीं ले सकते। क्या आपने देखा कि G7 में क्या हुआ, उन्होंने डिक्लेयर किया चाइना को एज अ थ्रेट and they want to confront China on every stage. And you are a partner of China, and the first thing in BRI is CPEC, and you are a partner with China and CPEC. So do you think you're going to get away with it? It's up to you. It's up to us to decide okay, what will be the diplomatic fallout, what would be the economic sanctions, maybe God forbid now, लेकिन it is possible, right? So क्या आप अगर सुपर पावर के साथ रिलेशन खराब करेंगे, उनके साथ लड़ेंगे, तो do you think that you are going to improve things? Certainly not. And we should always remember, कि going that channel is very difficult path, or not only United States but United Kingdom, Germany, फ्रांस, ठीक है, एंड इसराइल, ठीक है। इसराइल के साथ तो वी आर ऑलरेडी, हम तो अजल से लेके अब तक वी आर एनिमीज, राइट, यू नो। Saudis, where do they go? Right? Where do they go with us when we go fast forward with CPEC and do not give basis to them? Do they come under the American influence to pressurize us? Who knows? Who knows? It could be very, very difficult for us in the future. It's a difficult path that we are moving with, and the US has said that we must be ready for that. We must be ready for that, and we must cooperate. And the CIA director was here personally, and if the CIA director is here, we must remember, we must realize it must have been something really, really important that they were here for. So, with this, uh, I conclude the history, and what I have to say is, that in the current scenario and in the past, we did deal with the US, right? हमने deal किया, लेकिन जब हमने उनके साथ, जब हम किसी भी उसमें गए, अरेंजमेंट में गए, तो वी लेवरेज वेरी लेस, हमने बड़ा लेस जो है लेवरेज किया। एक्सेप्शन एक थी कि जनाब जब जियाउल हक थे, देयर इज नो हार्म कि ही वाज अ डिक्टेटर, he was a dictator and he was not, he was an evil man, but जो उसकी एक negotiating पावर होती थी वो डिफरेंट थी कि ही एक्सट्रैक्टेड F-16 फ्रॉम द यूएस, और जब यूएस से कोई मांगता था F-16, तो वो क्या कहते थे कि जनाब आपका दिमाग खराब है, दे वर नॉट इवन रेडी टू गिव इट टू द यूरोपियंस, बट ही डिड लेवरेज। तो we sold ourselves too cheaply at 9/11, all I have to say कि हम, and this is not my saying, this is expert opinion, कि हम बहुत ही easily उनके साथ हम गए in 9/11, but now we must remember, जो हम अभी बेसिस की बात हो रही है और सेटिंग की बात हो रही है, we must remember कि neither we can go all out against the US, nor we can go in for all out for US, and the thing is कि Taliban are here, and they are a reality, they are ethnic reality, वहाँ पे एक demographic उनकी reality है, ठीक है, वो वहाँ पर हैं, they are not going to go away from here, they are the Pashtuns, right? So uh, with this, I leave it to you, I leave it to your acumen, young people, कि what do you think, what do you think कि how it should be and how it should go. Tough times ahead for us, but we must work economically,
to strengthen ourselves. You cannot go with this economy के हम time and again IMF के पास जा रहे हैं. Number one point is this. Number two point is this कि we need to go great with CPAC. हमें CPAC को एक reality में change करना है because it cannot go like that. ठीक है? So we must improve our economy. Number one, to get out of the IMF jail, and we must number two, we must make CPAC a reality. And in दोनों चीज़ों से Pakistan is going to get stronger and stronger. Okay? And when we are stronger, we are going to be in a bargaining position, right? We are not going to beg. So, with this, I hope you understood. I hope you had a clarity. Okay? You were able to understand uh, whatever we discussed. And if you have any questions, you can write in this video or in the comments. You can ask questions and then we are going to answer that. But remember, okay, from 27th June, we are going to start a session and इसी same methodology में there would be teaching on paper from 27th June, and we are going to cover current affair and park affairs in combination. ठीक है, साथ ही साथ होगा एक ही सब्जेक्ट एक ही मॉड्यूल में. ठीक है, बिकॉज park affairs and current affairs are overlapping, or teaching current affairs without a history is not easy. So if we are teaching history, that is Park Affairs. So Park Affairs and current affairs, but the list of topic of current affairs I'm going to share. Okay. And if there is latest developments, we can always bring a change in the topics. It will be on your inputs as well. जो आपके inputs होंगे कि कौन कौन से topics हैं जो कि really important है, because then I'm going to prepare them. ठीक है, और फिर हम उसको पढ़ेंगे. पाक अफेयर्स में post independence we are going to cover, because pre-independence is history, and it will be very difficult to cover that. So I'm not going to lie to you or make false promises कि यार हम इसको करेंगे. I'm not that kind of person, not making any kind of false promises or lying to you. जो post independence वाले topic होंगे, we are going to try best to cover that. और करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स होंगे लेटेस्ट, उस पे जो लेटेस्ट मटेरियल होगा, I'm going to collect that and then we are going to talk about it, we are going to discuss. ठीक है, so from 27th June this is going to start. In case of clashes of time, there are recordings that will be available for you, and on the weekends, that is on Sundays and Saturdays, we are going to do morning like 10 to 12 a.m. p.m. a.m. because on 12 it becomes p.m. So 10 a.m. to 11 dot 59 a.m. Okay, or 12 p.m. you can say. So that would be our time on weekends, or जो classes होंगी that are going to be with the gap, right? So if you have any kinds of doubt, you can ask in the chat. Chat is available to you. ठीक है? The chat is available to you. You can ask questions that are pinching your mind, or if you want to ask about anything about your subjects or anything, you can always WhatsApp me on my number, which is 0346907130. Okay? And if you want to ask any other details, you can also WhatsApp on that and ask me questions about the session or about the class that we had today. So I hope you enjoyed. I hope you like this method. It is a hard work indeed, writing on the page and watching my notes as well, because I have written it, right? So let me type here. Here you go. Okay. Okay. So if you have a question, you can type. You are allowed to type. You can write a question. You can say what you have on your mind. Let's make it a dialogue. If you want to speak, I can unmute you to speak. You can raise hands.
can raise hands and I can allow you to speak. Okay. Okay. So if you have got any questions, I'm waiting. Maybe you are typing. Okay. So books जो होंगी इसके लिए for current affairs, there is, my advice is there is no book for current affairs. Current affairs is whatever that is happening, उसकी edition के साथ चीजें आप पढ़ते हैं, right? But apart from that, it varies from topic to topic. जो जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं उस पर आप कोई बुक होती है जहाँ से पढ़ते हैं. So when I was preparing, I didn't had the hold of any kind of a book which I use for current affairs. Park affairs I did use. So let me allow, and I'm allowing you to speak. Okay, so you should unmute yourself and speak. Okay. Alaikum, sir. Assalamu alaikum, sir. Sir, how can we get your notes? My notes. So actually, Yes. my notes, you would not be able to understand my notes. Like look at this. Do you understand what is this? Like you won't be able to understand them, and these are my own training notes. Like I'm taking classes. मैं पढ़ रहा होता हूँ ना क्लास में, तो ये वो नोट्स हैं. बट जो नोट्स होंगे मेरे पास इन सॉफ्ट फॉर्म, आई एम गोइंग टू गिव इट टू यू. लाइक मैंने क्या करना है उनका. लेकिन जो आर्टिकल्स वगैरह होंगे, जो चीज़ें मुझे मिल रही होती हैं, आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू. ठीक है, आई एम शेयरिंग इट ऑन डेली बेसिस ऑन माई पेज एज वेल. Excuse me, sir. Yes. Let me not understand your lectures, your notes, but let it share it if you don't mind, sir. नहीं, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन अब ये क्या है कि इसमें इतने सारे पेजेस हैं, इसके पिक्चर्स, इसका वो, तो वो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है. बट आई एम गोइंग टू जो ये वाले नोट्स हैं वो सारा मैं यहाँ पे जो है अंडरस्टैंडिंग के साथ लिख रहा होता हूँ. सो आई होप कि यू डोंट माइंड, बट दैट्स द रियलिटी कि वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मैं उसके पिक्चर्स लूँ और फिर आपको सेंड करूँ. गिवन माई टाइम टेबल इज़ वेरी कम्बरसम. बट आई विल गिव यू द सोर्सेज कि जिन सोर्सेज से ये कवर होते हैं, और उसमें ये सारा लिखा होगा. It will be easy. It will be easier that way. Okay. So who was up next? And what about the fee, sir? What? Yes, fee. So fee is actually, I've written it in my post as well कि जो fee है वो 4500 है. But if you are coming early, so it could be 4000. But if you are really deserving, last time people were complaining कि I'm charging and this and that. तो उसमें सीन ये है कि व्हेन आई अलाउ फ्री राइडर्स, और लास्ट टाइम हुआ भी कि जो फ्री राइडर्स होते हैं दे आर नॉट सीरियस और वो पूरा सेशन कोलैप्स हो जाता है. सो आई डू नॉट वांट दैट सेशन टू कोलैप्स. देयर शुड बी अ मीगर फी, और वो है. लेकिन अगर इफ़ यू हैव गॉट अदर सीरियस इश्यूज जो आप ये भी नहीं कर सकते, तो वी कैन मेक अरेंजमेंट्स फॉर यू. फर्दर वेवियर्स भी हो सकते हैं, डिस्काउंट भी हो सकते हैं. तो यू कैन डिस्कस विद मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर. इट इज़ ऑलवेज गुड टू शेयर योर रियलिटी. लाइक स्टूडेंट्स होते हैं, कोई इश्यूज होते हैं, तो कोई मसला नहीं है. यू कैन शेयर विद मी योर इश्यूज. ओके. Okay, Hamayu, let me. I'm going to mute Tariq and allow Hamayu. Yes, Hamayu, please go ahead. Sir, I'm audible. Yes. Sir, actually, sir, I'm a student of international relations from University of Karachi. So, sir, I want just to go to attempt for the CSS, sir, and I got familiar with you through the Facebook pages. Okay. So, sir, today, sir, I forgot to join your session earlier, and I joined late. But sir, I want just to ask a question from you, sir. Is it necessary to join any academy for the preparation of CSS? अच्छा, academy का ये सीन है कि my advice is कि आप advice ज़रूर लें किसी की. academies में CSPs होते हैं ना, so आप
अगर एकेडमी ज्वाइन करते हैं इट इज़ वेल एंड गुड, ठीक है। मैं ये कहता हूँ आप एडवाइस लें, एडवाइस लिखें, एडवाइस लें। वो आपको CSPs देंगे, या तो वो एकेडमीज़ में होंगे, लाइक वेट अ मिनट, इट्स नॉट विजिबल, ओके। एडवाइस आपको CSP से मिलेगी जो कि एकेडमीज़ में होंगे। सो इफ़ यू कैन डू दैट इट्स वेल एंड गुड, बट इफ़ इट इज़ नॉट क्वालिटी एकेडमी अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बाय क्वालिटी आई मीन टू से कि आप NOA जा सकते हैं, ठीक है, आप JWT जा सकते हैं, आप सर मुरीद जसरा के पास जा सकते हैं। दे आर ऑल लाइक मुरीद जसरा और नोआ के साथ मेरी है अफिलिएशन, आई हैव गॉट सम रिलेशनशिप विद देम। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो डू गो फॉर। बट याद रखें कि जो एकेडमीज में जो कोर्स होता है उसमें दे आर टीचिंग 5 lectures per class, like 5 they are given 5 or 6 at maximum 7 or 8, इतने क्लासेस होते हैं उनके जिसमें उन्हें कवर करना होता है, ठीक है। तो उनका सिर्फ ये होता है, ठीक है। एंड उनका ये है कि एक लेंथी प्रोसेस होता है, कुछ सब्जेक्ट के टीचर अवेलेबल नहीं होते हैं और लंप सम आपसे ले लेते हैं। दैट इज़ अ नेगेटिव पॉइंट। पॉजिटिव मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पे आपको एडवाइस मिल जाती है, ठीक है, राइट। आपको एडवाइस किसी से भी मिल सकती है, ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे कि दे सेड कि वी हैव डन इट विदाउट एकेडमी। सो एकेडमी इज नॉट अ मस्ट, बट इट इज लाइक इट इज गुड बिकॉज वहाँ पे CSPs होते हैं जो आपको गाइड करते हैं, ठीक है। सो इफ यू आर कमिंग विद मी आई विल गाइड यू टू माय बेस्ट, जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उसमें गाइड करूँगा। एकेडमी जाते हैं वहाँ पे भी आपको CSPs मिलेंगे, लेकिन अगर आपके रीच में नहीं है, दूर है, सो डोंट गो फॉर दीज जो नई नई बनी है, उसमें उन्होंने टीचर्स भी वो किए होते हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, फिर वो बीच में आपको छोड़ देते हैं इन द मिडल ऑफ नो वेयर, ठीक है, सही है। तो इसमें ये ड्रॉबैक होता है। फिर जहाँ पे JWT है या नोआ है वहाँ पे लोड टीचर्स के ऊपर होता है, दैट इज अ फैक्ट। टीचर्स के ऊपर थोड़ा लोड होता है, वो आपको टाइम नहीं दे पाते। सो यू गॉट ग्रीवेंसेस, बट आई वुड से कि इंग्लिश ऐसे और प्रेसी ये मस्ट आप किसी टीचर से पढ़ें और एक्सपर्ट से पढ़ें, ठीक है, जो एक्सपर्ट टीचर्स होते हैं। चेकिंग के लिए यू कैन सेंड इट टू मी, आई कैन चेक यू योर एसे, लेकिन जो आपको पढ़ाने वाला है, टेक्निक समझाने वाला है, ही शुड बी एन एक्सपर्ट, रिमेंबर दैट। बिकॉज अगर वो एक्सपर्ट नहीं होगा तो आपको पता नहीं क्या पढ़ा रहा होगा, राइट, और कौन सा तरीका आपको समझा देगा, राइट। सो गो फॉर इंग्लिश प्रेसी और ऐसे में मस्ट टीचर इज अ मस्ट, ठीक है। टीचर आप ढूंढें, उनसे पढ़ें, राइट। लॉन्ग आंसर, Thank you, sir. Thank you. ओके। Sir, what courses can you deliver to us? Like, can you deliver, sir, international law or any kind of that subject, sir? इंटरनेशनल लॉ मेरा सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन अभी मैं पढ़ रहा हूँ एकेडमी में, मतलब हमारी जो अपनी फॉरेन सर्विस की एकेडमी है उसमें मैं पढ़ रहा हूँ। और इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ गाइडेंस रिगार्डिंग द बुक्स तो उसमें मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, जो बुक्स हैं उसमें मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। और लेकिन पढ़ाने का आई हैवंट गॉट अ प्लान रिसेंटली बिकॉज मुझे खुद नहीं आती, तो मैं कह दूँ कि यार मैं पढ़ा रहा हूँ, सो दैट वुड बी अनफेयर टू ऑल ऑफ यू। बट करंट अफेयर्स एंड पाक अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं, एंड आई फेल्ट, पहले मैं नहीं पढ़ा था बट आई फेल्ट कि आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ डाटा फ्रॉम फ्रॉम हेयर, एंड इट कुड बी रियली इजी फॉर मी टू, क्योंकि जो मैं जो सीखता हूँ आई कैन डिलीवर टू यू। सो आई होप कि इट वुड बी सो द टाइमिंग इज कि वीकेंड्स पे हम सुबह करेंगे और क्लास लेंगे, and then the weekdays we are not going to take consecutive classes because it is difficult for you to revise and remember, because I'll be sending articles, things, चीज़ें होंगी, आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। इससे आपका एक ये भी हो जाएगा कि उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें जो कि आपको चलानी है करंट अफेयर में। बिकॉज करंट अफेयर में हम अप टिल योर एग्जाम तो हम नहीं जा सकते, लेकिन सम मिड वे में विल बी कटिंग आफ्टर अ मंथ। तो आपको एक मंथ में ये पता लग जाएगा कि आपने कहाँ कहाँ से चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन सी चीज़ उठानी है। बिटवीन दिस करंट अफेयर सेशन आई एम ऑल्सो गोइंग टू टीच यू कि आपने न्यूज़पेपर का आर्टिकल कैसे पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल अभी तो मैं नहीं करा सकता आपको, बट देयर इज एन आर्टिकल विच इज हेयर, लेट मी गिव मी सम, लेट मी शो यू। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन आर्टिकल, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू टीच यू इन सम सेशन कि इस आर्टिकल को आपने कैसे स्किम करना है, कैसे पढ़ना है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। करंट अफेयर का एक हम ये भी पढ़ेंगे कि उसके नोट्स जो होंगे वो कैसे बनेंगे, बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ
द क्लास कि आपको नोटशीट बनाने सिखाने। सो या, इज दैट इट क्लियर? आई होप यू गॉट इट। और जिसने सेशन मिस किया है, सो दिस वुड बी अपलोडेड ऑन फेसबुक, सो यू कैन वॉच इट। तो वहाँ पड़ा होगा, आप उसको बार बार देखें, उसको रिवाइंड करें, फास्ट फॉरवर्ड करें। ओके, यस, एनीबॉडी एल्स वांट टू से समथिंग? एक्सक्यूज मी सर। यस यस, जमाल प्लीज। सर मैंने तो अभी लेट सेशन ज्वाइन किया, यहाँ पर नेट का बहुत मसला है, अच्छा लेकिन सर अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता, सर मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत ज़्यादा सर मुश्किलात पेश आ रही है सर। हम मसला हल कर लेंगे उसका, इतना बड़ा मसला ही नहीं है न्यूज़पेपर, हम कर लेंगे इसको मतलब सर आप डिस्कस। अगर आप इस तरह कोई ट्रिक्स वगैरह से कह रहे हैं कि मतलब हमने क्या क्या चीज़ से नोट करना है, किस हाँ तरह हाँ, वो बिल्कुल केवलरी पिकअप करनी है सर, और किस तरह बिल्कुल मतलब बिल्कुल आर्टिकल हमने पढ़ने। और बिल्कुल दूसरी बात सर ये है कि मतलब डांस से मुझे वैसी हिचकिचाहट होती है, अगर मैं दी न्यूज़ या फ्रंटियर पोस्ट तो वो पता नहीं उसमें मैं इजीली कंफर्ट मतलब फील करता हूँ, लेकिन डांस जब मैं मतलब उठा लेता हूँ तो वो मुझे बहुत मतलब वो डराता है सर। डॉन आपके लिए सैड है इस तरह का। जी सर। सो बस उसमें ये है कि इट्स जस्ट अ मेंटल, आपकी मेंटल परसेप्शन होती है, वरना ट्रिब्यून मैंने खुद लगाई हुई है यहाँ पे। मैं डॉन भी दूसरे जो मेरे दोस्त हैं उनको पढ़ लेता होता हूँ। तो डॉन का सिर्फ आपको किस चीज़ में डिफिकल्टी होती है? लाइक वोकेबलरी आपको डिफिकल्ट लगती है? मतलब सर डांस से मुझे ये है कि मतलब एक तो मतलब मुझे मुश्किल इसमें है कि मतलब बहुत सारे लोगों से हमने सुना है कि अगर आप करंट अफेयर के लिए नोट बना रहे हो तो वो आप मतलब ऐसे कीजिए तो वो आप मतलब डेफिनेटली न्यूज़पेपर से उठाओगे। अब न्यूज़पेपर में सर कॉलम तो बहुत बड़ा होता है, जिस तरह ये ओपिनियन हमारे सामने पड़ा है मलिहा हलूदी वाला। हाँ तो हाँ सर मतलब हाँ। मुझे उसमें फिर समझ नहीं आ रही कि हमने क्या क्या नोट करना है, कौन सी चीज़ स्किप करनी है, कौन सी उठानी है, और किस तरह हम इससे नोट्स बनाएंगे। इसका मैं तो आपको बता देता हूँ बिफोर यू लीव, ताकि आपको कुछ हो आपके पास जाने से पहले, आप कहें कि यार कुछ भी नहीं लिया और हम आ गए। तो उसमें ये है कि जो कॉलम होता है ना, ये देखें सारा, ये तो बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है? ये तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि आप ये सारी चीज़ें नोट करें, रिमेंबर करें। तो उसका एक तरीका ये है कि जो अच्छा कॉलम होता है ना, अच्छा कॉलम वो हफ्ते में एक या दो आते हैं, सही है? एक या दो तीन, हार्डली चार कॉलम वीक में अच्छे आ जाते हैं। तो आप उसको ये करें कि न्यूज़पेपर तो आपके पास है, आप हार्ड में पढ़ते हैं या सॉफ्ट में पढ़ते हैं? नहीं सर साफ में तो मैं नहीं पढ़ सकता बिल्कुल भी, अच्छा, हार्ड में ठीक है। सर पढ़। हार्ड में पढ़ते हैं तो आपके पास सीजर होगा, आप सीजर से उसको कट कर लिया करें और उसको अपने रजिस्टर में सेव करें। नंबर वन। नंबर टू, उसमें आप एक तरीका बनाएं कि आप ये कहें कि मैंने सिर्फ इसमें से चार चार पॉइंटर्स निकालने हैं, चार हेडिंग मैंने निकालने कि इसमें चार मेन मेन बातें कौन सी हैं। देखिए, कोई भी कॉलमनिस्ट जो है ना, वो इतने बड़े कॉलम में सारी इंपॉर्टेंट बातें कि हर एक लाइन उसकी इंपॉर्टेंट है, दैट इज नॉट, दैट इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है? उसकी इंपॉर्टेंट बातें तीन चार ही होती हैं जो उसमें आपने समझ। प्रेसी क्या होती है? प्रेसी आपसे क्यों लिखवाते हैं? बिकॉज वो इतना बड़ा ऐसे है, आपने शॉर्ट करके लाना होता है, ठीक है? तो इसमें आप क्या करें कि आपने फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ है ना, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, आपको पता है कि हर पैराग्राफ की एक एक हेडिंग बनेगी, तो आप वो 10 बातें लिख लें कि यार इस पैराग्राफ में क्या कहा, इसमें क्या कहा, इसमें क्या कहा, बस। ठीक है, समराइज कब कर सकते हैं सुनिए, जब तो आप वो लिख लें उस कॉलम के साथ। और ये भी बहुत ज्यादा है आपके लिए, लाइक मैं आपको बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, ड्यू टू द रीजन द फैक्ट के देन पर्सन फील्स कि यार मैंने कुछ सीखा ही नहीं इतना पढ़ने के बाद, इतना लंबा कॉलम पढ़ लिया और कुछ मिला ही नहीं। ठीक है? जी सर। और सर ये मतलब डान न्यूज़पेपर में या जो भी न्यूज़पेपर उसमें जितने भी एडिटोरियल ओपिनियन तो सारे हमने पढ़ने होंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग बता रहे हैं कि न्यूज़पेपर पर आपने इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैक्सिमम अगर बहुत ज्यादा हाँ, तो 1 आवर तक। 30 मिनट्स, ठीक है, फॉर द होल न्यूज़पेपर, सारी खबरों के लिए। और जो ओपिनियंस हैं उसके लिए आप फिर जितने ओपिनियन होंगे उसका टाइम फिर जितना भी लगेगा आपको लगाना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? अगर अच्छा ओपिनियन है तो उस पर टाइम लगाएं, बिकॉज वो एक एसेट है आपके लिए, ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट है आपकी। ठीक है? आप उस पर टाइम लगाएं, अगर अच्छा ओपिनियन है उसको आप जी जल्दी सर। जल्दी ना गुजारें, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा है, कुछ सीखेंगे वहां से। लेकिन हर एक ओपिनियन भी अच्छा नहीं होता, हर एक बंदा हवा में उड़ा रहा होता है। तो ये भी मैं अब पैसेज ऑफ टाइम, अगर आप मेरे साथ सेशन में आए तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह होता है, या फिर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना लूंगा फेसबुक के ऊपर,
ताकि आपको पता लगे कि न्यूज़पेपर में किस तरह किस किस दिन अच्छे कॉलम आते हैं और कौन सा कॉलम इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कुछ लोग आर्ट पे भी लिख रहे होते हैं, आर्ट्स पे लिख रहे हैं, मेंटल इलनेस पे लिख रहे हैं। अब उस काम में क्या करना है, चीज़ मेंटल इलनेस, आर्ट्स काम में क्या करना है? ठीक है, तो आपने लेट ज्वाइन किया तो आप पूरी वीडियो फिर जी देख सर। लें, बाद में फेसबुक पे ये अपलोड हो जाएगी, लाइव स्ट्रीम सेव हो जाती है वहाँ पे, आई विल शेयर इट। ओके सर, ओके, थैंक यू ठीक है, सर। और डॉन की बात की हुमायूं ने कि डॉन इज नॉट सूटेबल, डॉन इज द मोस्ट सूटेबल, राइट, रिमेंबर, डॉन इज द मोस्ट सूटेबल। आप डॉन पढ़ लें हार्ड में, और सॉफ्ट में कोई और एक और ट्रिब्यून है। ट्रिब्यून में ये फायदा होता है कि इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स का सप्लीमेंट भी आता है। ठीक है, ट्रिब्यून में क्या होता है, आई एम राइटिंग हियर, न्यूयॉर्क टाइम्स का एक सप्लीमेंट आता है। तो अगर आप, आपके लिए अच्छा है कि आप एक ये भी देख लें, न्यूयॉर्क टाइम्स का सप्लीमेंट भी आप पढ़ लें, उसमें आपको ये भी फायदा हो जाता है, राइट। तो ट्रिब्यून भी अच्छा न्यूज़पेपर है, बहुत अच्छा है, इस तरह नहीं है कि बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप ट्रिब्यून पढ़ रहे हैं तो डॉन का काम हो जाएगा, रिमेंबर दैट। अगर आप डॉन नहीं पढ़ते तो ऐसा नहीं है कि ये कोई हदीस की लकीर है कि डॉन से ही होगा, ट्रिब्यून से भी हो जाएगा। मैगजीन जो आप पढ़ेंगे उसमें आप एक तो ये JWT का मैगजीन आता है, उसमें आपकी CSS के रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना, इसलिए वो अच्छा रह जाता है। फिर अगर आप बहुत आगे निकलना चाहते हैं तो आप जो है फॉरेन पॉलिसी मैगजीन एक आता है, एक द इकोनॉमिस्ट आता है, ठीक है, ये पढ़ लें, ठीक है। और ग्लोबल विलेज स्पेस का भी आता है, अगर पाकिस्तान का पढ़ना है वो भी गुजारा कर जाता है। लाइक ग्लोबल विलेज स्पेस में मुईद यूसुफ को जानते हैं, डॉक्टर मुईद यूसुफ, ये जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, तो उनका जो है ना ग्लोबल विलेज स्पेस, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो इफ यू, अगर आपको इससे अगेन कोई क्वेश्चन है तो इस चैट में ना ऊपर मैंने नंबर, आई सेंड इट टू यू अगेन, जो अभी आए हैं, ठीक है। somebody got another question? Okay, JWT is okay, you can go for it. Okay, so that is it, the session comes to an end, and we are going to end it here, or if you have got anything else you can ask me on WhatsApp. Okay, Allah Hafiz.